Good Good morning. morning, ma'am. Good So in the last morning, ma'am. good morning. So in the last lecture we had completed till BCD encoders and decoders, correct? Decoder was done. Yes, ma'am. So today we'll start with flip flop. Okay, so what is a flip flop? A flip flop is a binary cell which is capable of storing one bit of information. Now, by one bit information, what do we mean? One bit means it can either store 0 or 1. It can either store 0 or 1. Okay, so what is flip flop? A flip flop is a binary cell capable of storing either one bit information, that is either 0 or 1, right? Now, we can consider this flip flop as a one bit memory element, or we can say a memory element which can store one bit information, right? Now, flip flop is also known as a bistable multivibrator. It is also known as a bistable multivibrator. Now, why this name is given to the flip flop bistable multivibrator? Because as we said right now, it can store one bit information which is either 0 or 1. So this 0 and 1, these are considered as the stable states of the flip-flop. The stable states of the flip-flop. The flip-flop can retain the states. It can either retain 0 or it can either retain 1. So it can remain stable in both these states. So that is why it is known as bistable multivibrator, right? It has two states which are the two stable states, and therefore it is known as the bistable multivibrator. Understood? So this is about the flip-flop. Now, how are your sequential circuits different from your combinational circuits, right? Up till now हमने half adder, full adder ये सब पढ़ा, right? These were your combinational circuits, I told you, right? But this flip-flops. These flip-flops, they are your they are the part of your sequential circuits, or we can say they are sequential circuits, right? So, what is the difference between the combinational circuit and the sequential circuit? Or I can say, what do you understand by a sequential circuit? So, a sequential circuit is a one which has the memory element in it. A sequential circuit is a one which has the memory element in it, right? Memory element का मतलब होता है it has a flip flop which will retain the past states, or we can say which will retain your past results, or we can say which will store the past results. तो जो आपका result आया है, that results will be stored, and those stored results will be presented as an input in the current stage. यानी कि जब आप next combination present करोगे, उस time हम जो combination है उसे present करते वक्त जो previous output है उसे भी हम हमारी circuit में present करेंगे as an input. So the previous output will be presented as an input in the current stage, and that is why it is known as the sequential circuit. मतलब sequence में जो तुम्हारा पास आउटपुट आया उसे वापस से मैं एज अ इनपुट प्रेजेंट कर रही हूँ. So that is why it is known it as it goes in a sequence. So that is why known as the sequential circuit, right? So in the combinational circuit we were not doing such thing. We just presented the input combination and we got one output. That's it. ठीक है, तो हम एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करते थे और हमें आउटपुट मिलता था. फिर हम उस आउटपुट को दूसरा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करते हैं एंड वी चेक व्हाट इज द आउटपुट. तीसरा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट किया, वी चेक व्हाट इज द आउटपुट, बट वी नेवर प्रेजेंटेड आउटपुट एज एन इनपुट. ठीक है, so that is the difference between the combinational circuit and the sequential circuit. In the sequential circuit, you will use your past set of outputs as the input, and you will check the output for that also, right? And the past output will be stored in some memory element. So that is why your flip-flop, sorry, your sequential circuit, they have the memory element with them. Okay? Rest of the things otherwise is the same. Okay? Now, we have four types of the flip-flops. We have four types of the flip-flops. Which are those flip-flops? These are SR or RS flip-flops, SR or RS flip-flops, D flip-flop, JK flip-flop, and T flip-flop.
राइट. दिस आर एस आर और आर एस. एस आर और आर एस का मतलब है सेट, रीसेट, फ्लिप फ्लॉप. Right, S stands for set, R stands for reset. So it is set, reset, flip flop or reset, set, flip flop. RS का मतलब होता है reset, set. ठीक है. Then we have D flip flop or delay flip flop. Right, the delay, the full form of this capital D is delay. The full form of this capital D is delay. So it is known as delay flip flop or D flip flop. Then we have JK flip flop. JK flip flop का मतलब है jump and key flip flop. Jump and key flip flop. ठीक है. And the last one is your toggle flip flop, that is key flip flop. तो key का मतलब होता है toggle, right? So it is your key or toggle flip flop. So these are the four basic flip flops which we are going to study, right? Let us start with the first one, which is SR or RS flip flop. As I said, SR stands for set, reset. आपको पता ही होगा set का मतलब होता है 1 and reset का मतलब होता है 0. I have told you that these are the words alternatively used while presenting the logic 0 and 1. For the logic 0 and 1, right? So it is for 1 it is set, R it means reset, which means logic 0. It is set, reset or reset, set, flip flop. अब SR बोलो या RS बोलो, it is one and the same thing. Okay. Now this is your logic diagram of the SR flip flop. Right. Now what you can see over here are the four NAND gates. These are your four NAND gates. ठीक है, NAND gate है ये, NAND gates. These are your four NAND gates. Now, if you check your textbook, if you go to your textbook, you will find the figure is different and it is constructed using NOR gate. I think it is in your textbook, it is constructed using NOR gate. Well, any figure you draw, it is correct. But देखो यहाँ पे जो मैंने NAND gates use करके बनाया है, that is what why I have done this, because see, एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करोगे अगर फिगर्स ड्रॉ करने के लिए तो इजी रहेगा. एक का लॉजिक डायग्राम आपने याद रखा तो इजीली यू विल बी एबल टू रिमेंबर द लॉजिक फिगर्स ऑफ अदर. अदरवाइज आप अगर टेक्स्ट बुक की जैसा देखोगे तो टेक्स्ट बुक में दे हैव शोन इट वेरी नो रैंडम फैशन. कहीं पे नॉर गेट यूज करके बना दिया, फिर डीले फ्लिप फ्लॉप में कुछ और गेट का और दूसरे किसी गेट का कॉम्बिनेशन यूज करके बनाया. फिर जब जेके आया तो एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन यूज किया और बनाया. तो अलग 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 ऐसे मेथड से उन्होंने सर्किट फिगर बनाई है. तो इन दैट केस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर. आप लोग को हर एक सर्किट फिगर अलग से याद रखनी पड़ेगी. यहाँ पे तुम लोग को आसानी क्या होगी, अगर तुमने एसआर का फिगर याद रख लिया, इफ दिस फिगर you just remember, you remember it properly, then you will be easily able to draw the logic figure of delay flip flop. ठीक है, तो एसआर का याद रख लिया तो आपको डिले का ड्रॉ करना इजी हो जाएगा. सिमिलरली फिर एक जेके का याद रखोगे तो जेके एंड टी दे बोथ हैव द सेम लॉजिक फिगर, जस्ट अ माइनर चेंजेस देयर इन बिटवीन. सिमिलरली यहाँ पे एसआर और डिले में भी सेम चीज है. एसआर का याद रखोगे तो डिले का इजीली याद रह जाएगा बिकॉज वहां पे भी सिर्फ एक ही माइनर चेंज है. दैट्स इट, अदरवाइज द एंटायर फिगर इज सेम. ठीक है, तो एक प्रॉपर मेथड और प्रॉपर फ्लो याद रखो जिससे आप लोगों को ही आसानी हो लॉजिक फिगर्स ड्रॉ करने में या फिर लॉजिक डायग्राम्स ड्रॉ करने में. बुक में बहुत ही ज्यादा रेंडमली दिया है, कहीं पे नॉर गेट का यूज करके बना दिया, कहीं पे और गेट का यूज करके बना दिया, कहीं पे सी इट इज वॉट एवर गेट यू यूज, the what is the thing that we should get the end result, the end result should be the same as it is. जैसे आप मैथ्स करते हो, मैथ्स में कैसे होता है, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली बुलियन मैथमेटिक्स ओनली. तो सेम वे मैथ्स में भी कैसे होता है, आप कोई भी मेथड यूज करो, आंसर आपका लास्ट में चाहे वो लॉन्ग कट हो, शॉर्टकट हो, कोई भी मेथड हो, थोड़ा आपको लग मे बी आप फॉलो कर रहे हो मेथड से थोड़ा लंबा भी जा सकता है, मे बी इट माइट गो शॉर्ट ऑल्सो, बट एट द एंड यू हैव टू रीच टू सम रिजल्ट, राइट. तो दिस इज दैट सेम थिंग. यहाँ पे भी ये इसमें भी वही चीज होगा. तो इसीलिए आपको एक्चुअली में इट इज करेक्ट कि आप कोई भी गेट को यूज करके आप सर्किट बना सकते हो, but for your convenience from examination point of view, it is necessary that you remember the circuit figure with one proper method. ठीक है,
तो अगर एक प्रॉपर मेथड से रिमेम्बर करोगे तो आपको दूसरी चीजें लिंक करने में आसानी होगी या दूसरी चीजें रिमेम्बर करने में आसानी होगी। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रख लिया तो फिर दूसरे जो फिगर्स है, दूसरे आपके जो कंपाउंड है उसका आपको याद रखना इजी हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक लॉजिक डायग्राम याद रखोगे तो दूसरे दो तीन तुम्हारे इजी हो जाएंगे याद रखने के। Okay. Now see over here I have used four NAND gates. There are four NAND gates which I have used. Now this four NAND gates, the first NAND gate which is there, it is having the input S, right? As we know that a NAND gate will have minimum of two inputs. तो एक यहाँ पे input S है, दूसरा input आप देख सकते हो, it is a clock input. Now what is this clock that I will explain you later on, but just let us right now interpret the circuit diagram. So the first input is S, the another input is clock. Similarly to the second NAND gate, you can see that we have the clock input and we have the R input. We have the R input. ठीक है, तो ये तुम्हारे दो input हो गए S and R. Okay, now this is your first and second NAND gate. To the third NAND gate, this one is your third one. So to the third NAND gate, we have the output of the first NAND gate as an input, and we have this Q dash as the input to the third NAND gate. We have Q dash as the input to the third NAND gate. Okay, what is this Q dash? This Q dash is your output. This is your output variable Q and this is your output variable Q dash. Now dash का मतलब होता है बार। अभी तक का हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट जिसे बोला है और या फिर इन्वर्टेड आउटपुट जिसे बोलते थे, दिस इज दैट। तो दिस इज योर नॉर्मल आउटपुट Q एंड दिस इज योर इन्वर्टेड आउटपुट Q बार। ये आपका इन्वर्टेड या फिर कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है। तो दिस इज नथिंग बट Q बार। यहाँ पे डैश लगाया हुआ है, आप डैश भी यूज कर सकते हो, आप बार भी यूज कर सकते हो। So this is Q and this is Q bar. Now to the third NAND gate, the inputs are the output of your first NAND gate and the output of this fourth NAND gate. Okay, so these are the inputs. Similarly, if you check the inputs of your fourth NAND gate, what are the inputs? The inputs are the output Q of the third NAND gate and the output of your second NAND gate. The output Q of your third NAND gate and the output of the second NAND gate. ठीक है, तो ये आपको यहाँ से Q मिल रहा है एज एन इनपुट और यहाँ से आपको ये जो R ये वाले सेकेंड NAND गेट से जो आउटपुट आएगा दैट इज गिवन एज एन इनपुट टू योर फोर्थ NAND गेट। ठीक है, तो हमने जैसे मैंने बताया था सिक्वेंशियल जिसमें पास्ट आउटपुट यूज होते हैं। सो दिस Q एंड Q बार विल बी व्हाट, दिस आर नथिंग बट दिस आर द पास्ट आउटपुट। दिस आर नथिंग बट दिस आर योर पास्ट आउटपुट। ठीक है ना, तो ये पास्ट आउटपुट को हम एज अ इनपुट प्रेजेंट कर रहे हैं। So that is why it is known as the sequential circuit. These are your past outputs which you are presenting as the input. So that is why it is known as the sequential circuit. Clear? Now let us understand about this clock. So what is this clock? Clock means just इतना याद रखो कि this is the high voltage or the high input given for your entire circuit to operate. ठीक है, for this entire circuit to operate, this clock pulse should always be 1. ये जो clock है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ये clock 0 होगा तो पूरा ये आपका जो सर्किट है वो inactive रहेगा, it will be disabled, वो कुछ आउटपुट नहीं देगा, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है, so this is clock is nothing but it is the high input given to this circuit for its operation. ठीक है, so clock will always be considered 1. Now as I said we have actually हमारे पास तीन variables थे S, clock and R, but this clock as we said it is always going to be 1. इसे हम 1 पे फिक्स ही रखेंगे तो मेरे two input variables है, I have two input variables which are S and R. Now when I have two input variables, if I want to construct the truth table, I will construct the truth table with the 4 input combinations.
दो वेरिएबल्स है, देन आई विल हैव 4 इनपुट कॉम्बिनेशन. सो आई हैव रिटर्न दोस 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, तो ये मेरे 4 कॉम्बिनेशंस हो गए. अब हमें क्या चेक करना है कि जब हम ये इनपुट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कर रहे हैं हमारी सर्किट को, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है. So let us check the output for the first input combination which is 0 0. तो पहली input combination 0 0 के लिए हम output check करते हैं. ठीक है, S is 0, R is 0, both are 0. S and R both are 0. ठीक है, and as I said, clock will always be 1 because if clock is not 1, your circuit will never operate, you will not get any output. ठीक है, तो clock अब हम 1 ही consider करेंगे. तो S0 and clock 1. 0 1. What is the output of the NAND gate for 0 1? 1. 1. So you get 1 over here. ठीक है, over here also you have 0 1. What will be the output from the NAND gate? It will be 1. 1. Now this is 1 and this is Q dash. Okay, so 1 Q dash, right? See, Q dash Q, क्योंकि ये Q dash is given as an input to your third NAND gate and the other input is the output of your first NAND gate. तो अब यहाँ पे इनपुट क्या हो गए 1 एंड Q डैश. ठीक है, हम Q यहाँ पे Q डैश लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता था, जब हम पहला कॉम्बिनेशन 0 0 प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि पास आउटपुट क्या है. वी डोंट नो व्हाट इज द पास्ट आउटपुट करंटली, तो इसीलिए हम उसको ऐसे ही Q डैश ही रहने देंगे. तो वी हैव 1 डॉट Q डैश और आई कैन से we have 1 and Q bar. मैं डैश की जगह बार बोल रही हूँ. It is one and the same thing. So I have 1 Q bar as the input. So my output of the NAND gate will be 1 dot Q bar whole bar. Correct? My output from the NAND gate is 1 dot Q bar whole bar. ठीक है, आपको पता है ना NAND gate का इक्वेशन क्या है? It is A dot B whole bar. ठीक है, my A is 1, B is Q bar, so 1 dot Q bar whole bar. What is 1 dot Q bar? 1 dot Q bar will be Q bar. 1 dot Q bar will be Q bar. And Q bar bar. So bar will cancel out and what do you get as an output? You get as an output is Q. ठीक है, तो आपको यहाँ से आउटपुट क्या मिला? Q मिला. Understood? Now let us check the output from this port. ठीक है, so let us check the output from this fourth NAND gate. Now fourth NAND gate, यहाँ से आपको output 1 मिला था. R was 0, so it is 0 dot 1. So it is 0 1 का output for the NAND gate is 1 and you have now input Q to this NAND gate. So what are the inputs to this NAND gate? Q 1. Okay, now if I have to take the output, then what will be the output? Q dot 1 whole bar. Q dot 1 whole bar. Now Q dot 1 is Q and if I take bar of it I get Q bar. तो यहाँ से मुझे आउटपुट क्या मिला? Q बार. तो मुझे पहला जब मैंने प्रेजेंट किया इनपुट सेट 0 0 तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे आउटपुट Q मिल रहा है और यहाँ से मुझे आउटपुट Q बार मिल रहा है. जब मैंने बताया कि मैंने 0 0 प्रेजेंट किया तो मैंने बोला कि ये प्रीवियस इनपुट क्या थे मुझे नहीं पता था और इसके लिए मैंने Q और Q बार ऐसे ही प्रेजेंट किया है. तो मेरा प्रीवियस आउटपुट भी Q और Q बार था और करंट आउटपुट भी मुझे Q एंड Q बार ही मिला. ठीक है, द प्रीवियस आउटपुट वर आल्सो Q एंड Q बार and the current output which I am getting is also Q and Q bar only. ठीक है, so what I can write is that there is no change in the outputs when we present 0 0 as an input to the circuit. ठीक है, this is Q and this is Q bar. Please notice this is Q bar. I have forgotten to put bar over here. Okay, so this is Q and this is Q bar. What is the scenario that when I'm presenting 0 0 as an input to the circuit, the output which I am getting is the same.
मुझे सेम आउटपुट ही मिल रहा है, क्योंकि प्रीवियस स्टेज का आउटपुट मुझे पता नहीं था, मैंने उन्हें क्यू और क्यू बार कंसिडर किया, एंड the current stage output also I got it as q and q bar only. So it means there is no change in the output. The same output as the previous one I am getting. The previous output से वही same outputs मुझे वापस से मिलेंगे, right? So that is why in the truth table I have written this comment that no change in the output. No change का मतलब है no change in the output. Clear? There is no change in the output. Now, can anyone tell me that this kind of the operation is suitable in which practical scenario? कौन से practical scenario में ये आपको suitable होगा? Can anyone tell me in which? Security. No. Lighting. Hmm. सी प्रैक्टिकल सिनेरियो मीन्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आप ऑपरेशन करते हो तो कहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सी व्हेन यू डू कंट्रोल जेड अनडू ऑपरेशन, तो जब आप अनडू करते हो या रीडू करते हो तो क्या होता है, व्हेन यू प्रेस कंट्रोल जेड तो क्या होता है, जो आपका प्रीवियस आउटपुट था वही आपको मिलेगा ना, what the previous thing that you had done, the same thing you get it back, है ना। तो दिस इज दैट थिंग। समझ में आ रहा है? आपने कुछ टाइप किया या फिर कुछ फॉर्मेटिंग किया, फिर वो गलत हो गया, तो हम लोग इमीडिएटली क्या कर देते हैं, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड करने से क्या हो जाता है, जो प्रीवियस मेरा था वो सेम चीज एज एन आउटपुट मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो दिस सिचुएशन ऑफ एस आर 00 is useful in that case for control z, for doing control z, undo or redo operation, right? Because you will get the same output as the previous one. That's it. So that is that situation, 00, right? Now let us check for the next situation, which is 01, the next combination, which is 01. So what is my output if I present 01 as an input to the circuit? So when I am presenting 01 as an input to the circuit, this is 0, this is 1, right? Now this 1 means clock pulse is 1. S is 0, clock is 1. Over here, clock is 1, and as I put 0, R is 1. So over here I have R1, clock is always 1. Over here S is 0 and clock is 1. Again, what will be the output of the NAND gate for 0, 1? 1. 1, right? Now let us check the output of this third NAND gate first. So 1 dot Q dash, what will be the output? 1, this is 1, the input will be over here Q dash. So 1 dot Q dash bar, what will be the output? So it means 1 dot Q bar bar, what will be the output? Q. Q. Correct? So over here I'm getting Q. Let us check the output from this gate, from this gate, right? Second AND gate. So over here clock is 1, R is 1. 1, 1. What is the output of the NAND gate for 1, 1? 0. 1. NAND gate, 1, 1 NAND gate. 1. 0, 0. 0, 0. Kunal is saying correct, 0. Right? So 1, 1, it is 0. NAND gate. We are not talking about AND gate. We are talking about NAND gate. 1, 1 for NAND gate, it is 0. See, please, from the next lecture, sit with all your this NAND gate and NOR gate tables properly mugged up. Huh? I'll ask any. So it is 0. Now 0 dot Q. This Q is your input, right? 0 dot Q, right? Now
I'll just tell you. See, what is the truth table of your NAND gate? What is the truth table of the NAND gate? 0 0 1, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 0, right? So this is the truth table of my NAND gate. So if I observe the truth table of my NAND gate, what I can say is that when any of my inputs is low, when any of my input is low, the output is high. When any of my input is low, the output is high. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा इनपुट था, तो यहाँ से 1 1 था, तो 1 1 I was getting 0. यहाँ से मेरा इनपुट है 0 and 0 dot q. Now as I said, when any of the input is low, I am getting output high. So what, without any without wondering anything about q, whether it is 0 or 1, we can directly say my output will be 1, right? So 0 dot q bar will be 1 only. ठीक है, तो in short मुझे यहाँ पे q dash में I can say I will get 1. So I can say my q bar, this output of this port, q bar will be 1. Now see, this are your, as I said, this is your normal output and this is your inverted output. So if I have q bar 1, तो q क्या होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे q के लिए मुझे कोई वैल्यू नहीं मिला था, फिर मैंने यहाँ पे चेक किया, अब यहाँ पे चेक करने के बाद मुझे q बार 1 मिल गया. कैसे मिला? दिस इज 0, दिस इज q, 0 dot q. As I said, for the output of the NAND gate, for the output of the NAND gate, when any of your input is 0, when any of your input is 0, the output of the NAND gate is always 1. When any of the NAND gate input is 0, the output is always 1. So इसके लिए यहाँ से हम directly बोल सकते हैं कि my output will be 1. ठीक है, so this output is 1. This output is 1, it means my q bar is 1. If my q bar is 1, then what will be q? 0. 0, right? Q bar is 1, then Q is 0. This is normal, this is inverted. Inverted output 1 है, तो यहाँ पे Q क्या होगा? 0. ठीक है, so that is what is written over here, that for 0 1 input combination, Q is 0 and Q bar is 1. Q is 0, Q bar is 1. This is Q bar, huh? Please remember this thing, this is Q bar. So Q is 0, Q bar is 1. So when you present 0, 1 as an input, your output is 0, 1. Clear? Now, this kind of the situation is desirable in a computer when we want to repeat some set of actions. जब हम as a user किसी actions को repeat करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ formatting किया और I want the same formatting to be applied again and again in the sheet to some places. तो उसके लिए हम ये actions, ये इसको fit कर सकते हैं. ठीक है, for your repeating the set of actions also we have a shortcut. If you use that shortcut works on this logic, right? तो जब आपको कोई चीज बार बार रिपीट करनी है तो आप इससे कर सकते हो. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Now next is 1 0. So 1 0, S is 1, R is 0. ठीक है, now this is 1 1. The clock pulse is 1 1. 1 dot 1. What will be the output of the NAND gate for 1 1? 0. 0. Right? Now over here I am presenting 0. This is my Q dash. As I said right now, for the NAND gate, when any of the input is 0, the output is always 1. Okay? You have 1 as an output over here. So Q is 1. Now if my Q is 1, I can directly say that Q bar will be 0. No need to check or confirm from here. You can directly say that Q bar is 0. Okay? So my Q is 1, then Q bar will be 0. So that is what is written over here for input combination 1 0. Q is 1 and Q bar is 0. Understood? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next is
the last input combination, which is 1 1. Okay, now S is also 1, R is also 1. Clock pulse as usual, it is 1. So let us evaluate. So 1 1 1 1, what is the output from the NAND gate? 0, right? 0. Now 0 dot q bar, 0 dot this q bar, this q dash is as an input now. So this is 0 any input is 1. Now, as per the norms, right now, just we discussed that if Q is 1, then Q bar is Ma'am, your voice is breaking. everyone's brain. Voice is breaking, ma'am. Now, Okay, ma'am. Okay, ma'am. okay, so what we would say, what I was saying is, over here we had the input 1, the clock pulse is 1, right? So 1 1 is taken as an input. If I have 1 1 as an input, my output is 0. Okay, my output is 0. Now 0 dot q bar. 0 dot q bar means whenever I say that I have 0 as an input, what is the output? The output is always 1. Okay, na? 1. For the NAND gate, if any of my input is 0, the output from the NAND gate will be 1. So my Q is 1. Now, as per the norms, as we say, this is my normal input, normal output, and this is my complemented or the inverted output. तो अगर मुझे Q1 मिला तो Q bar 0 होना चाहिए. ठीक है. So let us now check whether Q bar is 0 or not. ठीक है. So for checking that, let us see. This is clock is 1, R is also 1. ठीक है ना. एस आर कॉम्बिनेशन हमारा 1 1 है. तो क्लॉक पल्स 1 है और आर भी 1 है. नाउ 1 1, what will be the output of the NAND gate? 0. 0. 0, right? Now over here 0 dot q. Now as said, 0 whenever you have as an input, what is the output from the 1. NAND gate? 1. तो 1. अब मुझे q बार भी 1 मिला. एक्चुअल में इफ आई से दिस इज माय नॉर्मल एंड दिस इज माय कॉम्प्लीमेंटेड, तो क्यू मुझे 1 मिला था तो क्यू बार 0 होना चाहिए था, बट क्यू बार 0 नहीं मिला. मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे क्यू बार क्या मिल रहा है? मुझे 1 मिल रहा है क्यू बार. ठीक है ना. राइट. तो ये Ma'am. क्रॉस चेक, हाँ, क्रॉस चेकिंग करने के बाद मुझे क्यू बार 1 मिल रहा है. Q1, Q is also 1, Q bar is also 1. That is not possible. That is not a desirable one. This is not a desirable condition. So that is why this kind of the condition is known as the race condition. हम इसे क्या बोलते हैं? Race condition. So that is why you see in the table it is written race or forbidden. इसके बहुत सारे नाम है. Race condition भी बोलते हैं, forbidden condition भी बोलते हैं, indeterminate condition भी बोलते हैं. Indeterminate ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि Q1 मिला, Q बार 0 होना चाहिए था, बट Q बार इनडिटर्मिनेंट स्टेट में जा रहा है, वो 0 नहीं आ रहा है, वो 1 आ रहा है. ठीक है. तो उसको इनडिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, उसको फॉरबिडन भी बोलते हैं, उसको रेस कंडीशन भी बोलते हैं. आप कुछ भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे कमेंट्स में सेम थिंग दैट व्हेन इट इज 1 1, यू आर नॉट गेटिंग Q and Q bar as per the normal thing. That is why it is known as a race condition or a forbidden condition or an indeterminate condition. Clear? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this was all about your SR flip flop. इसमें कहीं पे किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम, No, ma'am. doubts or queries? Right? Now see, this 1 1 वाली जो कंडीशन है, रेस कंडीशन, जिसमें हमारी सर्किट चली जाती है when we want. So this kind of the condition we don't want. This is meaningless. This is meaningless for us. ये हमें कुछ काम की नहीं है. रेस कंडीशन. ठीक है.
ये हमें कुछ काम में नहीं आएगी, राइट। ये फर्स्ट 3 स्टेजेस एज वी डिस्कस्ड, हमें जब मैं 0 1 प्रेजेंट करती हूँ मुझे आउटपुट में सेम चीज मिलता है। यहाँ पे भी 0 0 प्रेजेंट किया तो आउटपुट में नो चेंज, नो चेंज तो हम प्रीवियस आउटपुट सेम, प्रीवियस आउटपुट ही हमें वापस मिल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अगेन ठीक है, वो चलेगा हमें कंट्रोल, जब हम रीडू करते हैं अनडू करते हैं तो ये सारे स्टेट्स हमें काम में आएंगे। बट दिस race or forbidden condition will never be helpful to us in any way, right? So this is not desirable one. तो अब मुझे किसी तरह इस कंडीशन को, मुझे क्या करना है, किसी तरह इस कंडीशन को आई वांट टू अवॉइड। so what will be the way to avoid this condition? What will be the way to avoid this condition? So another flip flop came into picture which is known as the delay flip flop, which is known as the delay flip flop or D flip flop. इसका short name है D flip flop. The full form for this capital D is delay. The full form of the capital D is delay, right? So delay flip flop में क्या किया, in order to overcome that disadvantage of SR flip flop, as we saw, this is a disadvantage, this is meaningless condition, जैसे मैंने बताया कुछ काम की नहीं है, this is meaningless, we don't want it, right? So we can say this is the disadvantage of my SR flip flop. So in order to avoid that, in order to get rid of this disadvantage, to get rid of this disadvantage, another flip-flop was invented, which is D flip-flop, that is delay flip-flop. तो उसमें क्या किया, तो उसमें क्या नया चीज इनोवेशन में लाया कि